In a forgotten corner of the valley, where the grass whispered secrets and the trees stood like sentinels, lived a girl named Leora. वादी के एक भूले बसरे कोने में, जहां घास राजों की सरगोशी करती थी और दरख्त मुहाफिजों की तरह खड़े थे, एक लड़की लीवरा रहती थी. She was not known for strength or beauty, but for something far rarer. Her words could bend the wind. वो ना ताकत के लिए मशहूर थी, ना खूबसूरती के लिए, बल्कि एक बहुत नायाब चीज़ के लिए. इसके अल्फाज हुआ को झुका सकते थे. As a child, Leora discovered that when she wrote poetry, the wind would carry her verses across the hills. बचपन में, लीवरा ने दरियाफ्त किया कि जब वो शायरी लिखती, तो हवा इसके अशआर को पहाड़ियों के पार ले जाती. She would scribble on old parchment with a feather dipped in blackberry ink. वो एक पर से जो बीर की सियाही में डूबा होता, पुराने कागज पर लिखा करती. Every poem was like a spell, and the villagers soon began to notice strange things. हर नज़म जैसे कोई जादू होता, और गांव वाले जल्द ही अजीब चीजें महसूस करने लगे. Rain would arrive when she rhymed about longing. जब वो अदासी या तड़प पर शायरी करती, बारिश आ जाती. Birds would circle above when she wrote of freedom. जब वो आज़ादी के बारे में लिखती, परिंदे ऊपर मंडलाने लगते. One day, a traveling scholar named Emerin came to the village, drawn by the whispers of magic. एक दिन, एक घूमने वाला आलम, जिसका नाम अमीरन था, गांव आया, जादू की सरगोशियों से मुतवज्जा होकर. He studied her writings and said, "This is not mere poetry, it's aeroglyphic binding. You're shaping the wind." इसने इसकी तहरीरों का जायजा लिया और कहा, ये सिर्फ शायरी नहीं, ये हवा को बांधने का फन है. तुम हवा को शक्ल दे रही हो. Leora was skeptical, but Emerin gave her a challenge. लीवरा को शक था, लेकिन इमेरन ने इसे एक चैलेंज दिया. Write a poem of silence. Let's see if the wind can still sing. खामोशी पर एक नज़म लिखो. देखते हैं कि आया हुआ अब भी गा सकती है. Leora sat under the elder tree and wrote with trembling hands. लीवरा बोड़े दरख्त के नीचे बैठी और कांपते हाथों से लिखा. Let stillness speak and silence sound. No more cries from sky or ground. बने खामोशी बोलने लगे और सुकूत की आवाज हो, ना कोई फरियाद, ना आसमान से, ना जमीन से. The wind stopped. Not a leaf moved. The valley held its breath. हवा थम गई. कोई पता भी ना हिला. वादी ने सांस रोक ली. Emerin fell to his knees. You've silenced the wind. Do you realize what you are? Emerin घटनों के बेल गिर गया. तुमने हवा को खामोश कर दिया. तुम्हें मालूम है तुम क्या हो? But Leora was afraid. लेकिन लीवरा डर गई. Power like that could be dangerous. ऐसी ताकत खतरनाक हो सकती थी. So she locked away her ink, her parchment, and her feather. तो इसने अपनी स्याही, कागज और पर को छुपा दिया. The village slowly returned to normal, though the hills felt quieter, emptier. गांव आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गया, अगरचे पहाड़ियां ज्यादा खामोश और सुनसान लगने लगे. Years passed. Emerin left, seeking other mysteries. साल गुजर गए. Emerin चला गया, दूसरे राजों की तलाश में. But Leora remained, no longer the girl who wrote the wind, but the woman who listened to it. लेकिन लीवरा वहीं रही. अब वो लड़की ना रही जो हवा को लिखती थी, बल्कि वो औरत बन गई जो हवा को सुनती थी. Until one day, when drought gripped the valley and all hope was gone. यहाँ तक कि एक दिन, जब कहत ने वादी को जकड़ लिया और सारी उम्मीद खत्म हो गई. Leora took out her ink and wrote again. लीवरा ने अपनी स्याही निकाली और दोबारा लिखा. And the wind, like an old friend, returned. और हवा एक पुराने दोस्त की तरह वापस आ गई. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें. इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In a forgotten corner of the valley, where the grass whispered secrets and the trees stood like sentinels, lived a girl named Leora. She was not known for strength or beauty, but for something far rarer. Her words could bend the wind. As a child, Leora discovered that when she wrote poetry, the wind would carry her verses across the hills. She would scribble on old parchment with a feather dipped in blackberry ink.
Every poem was like a spell, and the villagers soon began to notice strange things. Rain would arrive when she rhymed about longing. Birds would circle above when she wrote of freedom. One day, a traveling scholar named Emerin came to the village, drawn by the whispers of magic. He studied her writings and said, "This is not mere poetry. It's hieroglyphic binding. You're shaping the wind." Leora was skeptical, but Emerin gave her a challenge. "Write a poem of silence. Let's see if the wind can still sing." Leora sat under the elder tree and wrote with trembling hands, "Let stillness speak and silence sound. No more cries from sky or ground." The wind stopped. Not a leaf moved. The valley held its breath. Emerin fell to his knees. "You've silenced the wind. Do you realize what you are?" But Leora was afraid. Power like that could be dangerous. So she locked away her ink, her parchment, and her feather. The village slowly returned to normal, though the hills felt quieter, emptier. Years passed. Emerin left, seeking other mysteries. But Leora remained, no longer the girl who wrote the wind, but the woman who listened to it. Until one day, when drought gripped the valley and all hope was gone, Leora took out her ink and wrote again. And the wind, like an old friend, returned. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी साथ अब तक रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।